Welcome, dear students. Uh, in today's lecture, we shall study the equation of orbit. We shall first construct equation of orbit under the action of a central force. फिर हम उस equation of orbit को solve करेंगे. And we shall see what are the shapes of orbits under an attractive central force. और सेंट्रल फोर्स भी हम इनवर्स स्क्वायर फोर्स लेंगे. And then we shall see that what is the relation between energy of a body and shapes of the orbits. So let us start. We shall start with the radial equation of motion. Mu times r double dot minus r theta dot square equals f of r. So we will divide by mu on both sides. So we will get r double dot minus r theta dot squared equals 1 by mu into f of r. So let us call this as equation number 1. We have got a relation between angular momentum L. L stands for angular momentum, and theta dot stands for the angular velocity. तो यहाँ से हमें थीटा डॉट के लिए एक्सप्रेशन मिलेगी L डिवाइडेड बाय म्यू और स्क्वायर. लेकिन आप इक्वेशन नंबर 1 में देखें, वी हैव गॉट थीटा डॉट स्क्वायर्ड. तो यहाँ हम इसकी स्क्वायरिंग करेंगे. वी विल गेट थीटा डॉट स्क्वायर्ड इज इक्वल टू L स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू स्क्वायर और रेज्ड टू पावर 4. So then our equation number 1 becomes r double dot minus r into, अब हम थीटा डॉट स्क्वायर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, that is L squared by mu squared r raised to power 4 is equal to 1 by mu f of r. तो यहाँ पे r 4 raised to power 4 का एक वैल्यू कैंसिल करेगा, तो वहां पे डिनोमिनेटर में r क्यूब बचेगा. सो वी आर गेटिंग r डबल डॉट माइनस L स्क्वायर बाय म्यू स्क्वायर r raised to power 3 is equal to 1 by mu f of r. Right? So we will call this equation as equation number 2. Let us define a parameter r is equal to reciprocal of u. So basically we are defining a new parameter u, which is the reciprocal of radial vector r. तो इसको हम differentiate करेंगे with respect to time. So that is r dot, which is dr by dt equals d by dt of r की जगह हमने वहां पे सब्स्टिट्यूट किया है u, 1 by u. सो इस u को डिफरेंशिएट करने के लिए इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे. नीचे इसका पावर 1 है, तो इसका पावर बनेगा -1. तो इसकी डिफरेंशिएशन आएगी, एक तो इसका पावर प्रोडक्ट में चला जाएगा इनटू u, इसका पावर था -1, एक और कम हो जाएगा, सो दैट विल बिकम -1 इनटू u की जो अपनी इंटरनल डिफरेंशिएशन है, दैट इज du by dt. तो वी आर गेटिंग, एक तो माइनस है और u रेज टू पावर -2 into du by dt. We will take this u in denominator, तो इसका पावर प्लस बनेगा. We are getting -1 by u square
into du by dt, राइट। तो इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे d थीटा बाई d थीटा। इन द नेक्स्ट स्टेप we will exchange the differentials in denominator. That means we will get minus 1 by u square into du by d theta into d theta by dt. So this equals minus 1 by u square into du by d theta into now this d theta by dt. This is rate of change of theta with respect to time. So it is the differentiation of theta with respect to time. तो इसको हम न्यूटोनियन नोटेशन में लिख सकते हैं. It is theta dot. So this is basically we are differentiating r with respect to time. So we have got dr by dt यानी कि r dot equals minus 1 by u square du by d theta into theta dot. इसको हम एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे. So that means r double dot equals d by dt of r dot, यानी हम r dot को एक और बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं. So this is d by dt of, अब हम r dot का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि ये है, which is minus 1 by u square into du by d theta into theta dot. तो इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे d थीटा बाई d थीटा, और ये जो डिनोमिनेटर्स में डिफरेंशियल्स हैं इनको हम एक्सचेंज करेंगे इन द नेक्स्ट स्टेप. सो वी विल गेट d बाई d थीटा of minus 1 by u square into du by d theta into theta dot into d theta, और हमने डिनोमिनेटर में डिफरेंशियल एक्सचेंज किया है. सो वी आर गेटिंग dt here. And this d theta by dt, it is again differentiation of theta with respect to time. तो इसको हम न्यूटोनियन नोटेशन में लिखेंगे theta dot. So which implies r double dot, which is basically d square r by dt square, यानी हम डबल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं रेडियल वेक्टर को with respect to time. We have got expression d by d theta of minus 1 by u square into du by d theta into theta dot. तो इसकी डिफरेंशिएशन है विद रेस्पेक्ट टू थीटा. फिर इसके साथ मल्टीप्लाई है आउटसाइड डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लाई में है प्रोडक्ट में है थीटा डॉट. तो दिस वी विल put as equation number 4. So this is double differentiation of radial vector with respect to time. So we have differentiated r twice with respect to time. So we have got equation number 2, equation number 3 जिसमें हमने substitute किया है. We have substituted r is equal to 1 by u, and we have also got the double differentiation of r with respect to time, which is our equation number 4. तो हम क्या करेंगे, we will use equation number 3 and equation number 4 into equation number 2. तो r डबल डॉट की जगह हम ये यूज करेंगे. We will write d by d theta of minus 1 by u square
into du by d theta theta dot. This is inside differentiation, and outside differentiation there is in multiplication theta dot. So this is r double dot. Then minus L square by mu square. अच्छा, R is the reciprocal of U. तो डिनोमिनेटर में R क्यूब है, तो हमें न्यूमरेटर में U का क्यूब मिलेगा, इज इक्वल टू 1 बाई म्यू. और इसी तरह जो f ऑफ R है उसकी जगह हम लिखेंगे f ऑफ 1 बाई U. Now again we will use the expression for theta dot. Theta dot equals L by mu R square, और चूंकि R is the reciprocal of U, तो R square डिनोमिनेटर में है, तो हमें न्यूमरेटर में U square मिलेगा. तो ये हम यहाँ पे यूज करेंगे और यहाँ पर भी यूज करेंगे. तो we will get d by d theta of minus 1 by U square du by d theta into L U square by mu. This is inside differentiation, and outside differentiation another theta dot. So L U square by mu minus L square U cube by mu square, and this whole thing equals 1 by mu into f of 1 by u. This is the equation that we have got. इसको हम थोड़ा और सिंपलीफाई करेंगे. We can see that u square and u square cancels out. एक और चीज हम देखेंगे, इस ब्रैकेटेड टर्म की डिफरेंशिएशन हो रही है with respect to theta. But inside the bracket, we see this angular momentum, that's a constant. Reduced mass, that is also constant. So they will get out of the differentiation. Acha, this L will get then multiplied by L, it will become L square. इसी तरह denominator में mu, and mu will get multiplied and it will become mu square. और u square तो numerator में है ही, तो I will write them in front. So I can write them, it is L square u square by mu square into then d by d theta. We can see कि फिर डिफरेंशिएशन होती है du by d theta की एक और बार डिफरेंशिएशन हो रही है. So that is double differentiation of u with respect to theta. और माइनस साइन तो वो हम आगे लिखेंगे. Then there is a second term, that is L square u cube divided by mu square, and this thing equals 1 by mu f of 1 by u. एक और काम करेंगे हम, we will multiply throughout by -1. So this will become plus, this will become plus, and right hand side will become minus. So the next step will be L square u square by mu square into d square u by d theta square plus L square u cube divided by mu square is equal to -1 by mu into f of 1 by u. एक और चीज हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर में हर जगह म्यू है, तो राइट हैंड साइड में म्यू विल कैंसिल, यहाँ पे म्यू का एक पावर कैंसिल, यहाँ पर भी म्यू का एक पावर कैंसिल. तो वी विल गेट L square u square divided by mu into d square u
by d theta square plus L square u cube divided by mu is equal to minus f of 1 by u. Let us multiply each term on left hand side as well as right hand side by this factor mu divided by L square u square. तो हम पहली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, so it will become mu by L square u square into L square u square by mu into d square u by d theta square प्लस दूसरी टर्म को भी हम म्यू बाई एल स्क्वायर यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इनटू एल स्क्वायर यू क्यूब डिवाइडेड बाई म्यू इज इक्वल टू, इसी तरह हम राइट हैंड साइड को भी म्यू डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू माइनस एफ ऑफ 1 by u. This is the equation that we have got after multiplying by this factor mu by L square u square. तो पहली टर्म में mu and mu will get cancelled. न्यूमरेटर में L square, डिनोमिनेटर में L square, न्यूमरेटर में u square, डिनोमिनेटर में L square. तो पहली टर्म बनती है फिर d square u by d theta square only plus दूसरी टर्म में L square and L square will go, mu and mu will go. डिनोमिनेटर में u के दो पावर्स हैं, न्यूमरेटर में 3 है, तो न्यूमरेटर में u का एक पावर बचता है, सो सेकंड टर्म में ओनली u स्टैंड्स इज इक्वल टू माइनस पहले लिखेंगे mu divided by L square u square into f of 1 by u. And this will be our equation number 5. We will keep this equation number 5 as such. Equation 5 is the differential equation of orbit of a body which is moving under the action of a central force. Now we shall see what are the shapes of orbits for a body which is moving under the effect of an attractive inverse scalar force field. अभी तक तो हम सिर्फ central force की बात कर रहे थे. Now we shall take a special type of central force which is inverse scalar, and we can take the example of gravitational force. So f of r will be equal to then minus g m1 m2 by r square. Now when r changes with the time, g does not change, m1 m2 does not change, so we will put that g m1 m2 equal to some constant k. So f of r equals minus k by r square. So let us use r is equal to 1 by u. Then our f of r will become f of 1 by u and will be equal to minus k. चूंकि डिनोमिनेटर में r स्क्वायर है तो हमें न्यूमरेटर में u स्क्वायर मिलेगा. We will use this in equation number 5. We will write then d square u by d theta square plus u is equal to minus mu divided by L square u square into, ये जो f of 1 by u है उसकी जगह हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे into minus k times u square. तो राइट हैंड साइड पे u square and u square will get cancelled. Minus and minus will also
become plus. So we will get d square u by d theta square प्लस u. तो फिर राइट हैंड साइड पे हमें बचता है म्यू के बाई एल स्क्वायर विद अ पॉजिटिव साइन. उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, द साइन विल बिकम माइनस. सो माइनस म्यू के बाई एल स्क्वायर, and this whole thing will be equal to 0, and this will be our equation number 6. So let us put this u minus mu k by L square whole thing is equal to x. तो अगर हम इसको differentiate करेंगे twice with respect to theta, तो एक बार differentiate करेंगे, we will get du by d theta. अब ये तो constant है, इसकी differentiation 0 is equal to dx by d theta. एक और बार differentiate करेंगे, so twice d square u by d theta square is equal to d square x by d theta square. So let us use equation 7 and 8. This is our equation number 8 into equation number 6. यानी कि जो u minus mu k by L है उसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x, और ये जो d स्क्वायर u बाई d थीटा स्क्वायर है इसकी जगह हम लिखेंगे d स्क्वायर x बाई d थीटा स्क्वायर. सो वी विल राइट d स्क्वायर x बाई d थीटा स्क्वायर प्लस x is equal to 0, and we will call this equation number 9. Now equation number 9 is a well-known equation of simple harmonic motion, and it is a general solution. We can write x is equal to a times, हम cosine function भी लिख सकते हैं, हम sine function भी लिख सकते हैं, theta minus theta naught. So this is our equation number 10. तो इसमें जो a है और थीटा नॉट है, दे आर टू कॉन्स्टेंट्स जिनको हम कहते हैं कॉन्स्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन, एंड दे आर गिवन बाय द इनिशियल कंडीशंस और बाउंड्री कंडीशंस. Now we have got equation number 7 and we have got equation number 10. तो we will use equation 10 into 7. equation 7 में जो x है उसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे equation number 10 से इसका वैल्यू. तो we will get u minus mu k by L square is equal to a cos of theta minus theta naught. ये जो नेगेटिव टर्म है लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे. वी विल गेट u is equal to mu k by L square plus a cos of theta minus theta naught. Let us write this expression in terms of r. यानी हमने u और r they are reciprocal of each other. तो जहां कहीं पे भी u है उसकी जगह हम लिखेंगे 1 by r. तो we will get 1 by r is equal to mu k by L square plus a cos of theta minus theta naught. हम एक और काम करेंगे, we will take mu k by L square common out on right hand side. तो पहली टर्म में हमें 1 मिलेगा, प्लस दूसरी टर्म में mu k by L square है ही नहीं, so we have to write L square by mu k, और a भी आएगा cos of theta minus theta naught. और लेफ्ट हैंड साइड पे है 1 by r, and we will keep this as equation number 11. Equation 11 is the equation of trajectory.
of a body which is moving under the effect of inverse square field force. Now we have got equation number 11. इसमें हम एक स्पेशल केस लेंगे कि अगर हम बेस लाइन को ऐसे रोटेट करें so that the initial angle theta naught we will make that 0. Then our equation number 11 becomes 1 by r equals mu k by L square bracket 1 plus AL square by mu k into cosine of angle theta. So we will call this as our equation number 12. Conic sections या जिनको हम simply conic भी कहते हैं. A conic is a curve जो हमें मिलती है. We obtain it as the intersection of the surface of a cone with a plane. जब हम कोन की सरफेस को एक प्लेन से काटेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, तो हमें एक कॉनिक सेक्शन मिलता है. There are 3 standard conic sections: ellipse, parabola and hyperbola. जो fourth conic section है circle, that is basically a special type of ellipse. तो ये different conic sections हमें कैसे मिलेंगे? When we will change orientation of the plane. तो अगर हम प्लेन लेंगे हॉरिजॉन्टल और ऐसे काटेंगे कोन को, तो हमें सर्कल मिलेगा लाइक दिस. अगर हम थोड़ा स्लांट एंगल इंक्रीज करेंगे और इसको ऐसे काटेंगे, तो we will get an ellipse. अगर हम slant angle और ज्यादा increase करेंगे like this, तो we will get a parabola. And if we increase the slant angle like this, इसको हम ऐसे काटेंगे किसी plane से, तो we get hyperbola. तो अगर हम इसको horizontally काटेंगे किसी plane से, तो we get circle. थोड़ा सा slant angle increase करेंगे, तो we get ellipse. और increase करेंगे we get parabola, और increase करेंगे we get hyperbola. So there are basically 3 types of standard conic sections: hyperbola, parabola and ellipse. And circle is actually a special case of ellipse. The general equation of a standard conic in terms of plane polar coordinates, yani r and theta. The equation is 1 by r equals 1 by L bracket 1 plus epsilon into cos of theta. Let us put that as equation number 13. इस equation को हम graphically plot करेंगे, तो we will get this diagram. So as an example of a standard conic section, I have taken parabola. So इस ग्राफ में एक parabola plot किया गया है. The curve in black solid line is parabola. तो जो आप horizontal green line देख रहे हैं, that is called polar axis. यानी कि इसी पोलर एक्सिस पे हम एक पॉइंट चूज करते हैं एज ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स एंड वी कॉल दैट फोकस और फोकल पॉइंट. और कॉनिक सेक्शन पे हम कहीं पर भी एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, पॉइंट पी. इट इज अ जनरल पॉइंट ऑन द कॉनिक सेक्शन. तो हम इस जनरल पॉइंट को फोकल पॉइंट के साथ कनेक्ट करते हैं, तो उनके दरमियान जो ये डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड द रेडियल कोऑर्डिनेट, और इसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं. और ये रेडियल कोऑर्डिनेट जो है, दैट इज द लाइन FP, ये कितना एंगल बनाती है विद आवर रेफरेंस एक्सिस, पोलर एक्सिस, दैट इज कॉल्ड द पोलर एंगल थीटा. इसके अलावा
there is one more line which is called directrix. It is a line which is perpendicular to the polar axis. तो एक कॉनिक सेक्शन के लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं एक्सेंट्रिसिटी. नाउ व्हाट इज दिस एक्सेंट्रिसिटी? हम किसी भी कॉनिक सेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं एज द लोकस ऑफ पॉइंट्स, यानी हम उन पॉइंट्स की लोकेशन देखते हैं. किन पॉइंट्स की हमने लोकेशन देखनी है और फिर उनको हमने एक दूसरे के साथ ज्वाइन करना है. whose distances to a point, that is the focus. तो मिसाल के तौर पे हम एक जनरल पॉइंट P ले रहे हैं, तो हमने देखना है इट इज डिस्टेंस टू ए फिक्स्ड पॉइंट जिसको हम फोकल पॉइंट कहते हैं. सो दैट मीन्स द डिस्टेंस इज FP. सो one distance is FP. The distance of any point on this conic section to the focal point and a line. तो यही जो जनरल पॉइंट है, अब हमने देखना है इसकी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन एंड दैट फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स. तो इसका मतलब है कि वी हैव टू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P on the directrix. So supposing it touches here, this is the foot of the perpendicular M. जब हम पॉइंट P यानी जनरल पॉइंट ऑन द कॉनिक सेक्शन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो वी सी व्हाट इज इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस डायरेक्ट्रिक्स. तो दूसरी जो डिस्टेंस है उसका हमने रेशो लेना है. सो वी विल टेक द रेशो ऑफ FP, यानी व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ जनरल पॉइंट फ्रॉम फोकल पॉइंट and what is the distance of the same general point from this directrix. So that is MP. This ratio is always a constant and that constant ratio is called eccentricity, जिसको हम epsilon से denote करते हैं. So we define conic sections as locus, as location of all those points जिनके लिए हम एक रेशो डिफाइन करते हैं. रेशो ऑफ टू डिस्टेंसेस. वन डिस्टेंस इज ऑफ ए जनरल पॉइंट फ्रॉम फोकल पॉइंट एंड अनदर डिस्टेंस इज ऑफ द सेम जनरल पॉइंट फ्रॉम द रेफरेंस डायरेक्ट्रिक्स लाइन. तो इन दो डिस्टेंसेस के दरमियान हम रेशो लेते हैं. दैट रेशो ऑलवेज कम्स अ कांस्टेंट फॉर एनी पॉइंट ऑन द कॉनिक सेक्शन, and that constant ratio is called the eccentricity. The eccentricity is a non-negative real number. It is ratio of two distances, और दोनों distances का सिर्फ हम magnitude लेते हैं, तो it is always positive. It is never negative. It's a non-negative real number and it uniquely characterizes its shape. यानी कि अगर हमें किसी कॉनिक सेक्शन की एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू पता है तो हम इसकी शेप बता सकते हैं. एक और चीज जो हम एक कॉनिक सेक्शन के लिए डिफाइन करते हैं, दैट इज द लेटस रेक्टम. लेटस रेक्टम इज द कॉर्ड. तो हमने एक कॉर्ड ड्रॉ करनी है. कॉर्ड मतलब एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इस कॉनिक सेक्शन को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे. बट दैट कॉर्ड मस्ट बी पैरेलल टू द डायरेक्ट्रिक्स. सो दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स. इसके पैरेलल हमने एक कॉर्ड ड्रॉ करनी है. एक तो वो डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होनी चाहिए एंड नंबर टू दैट शुड पास थ्रू द फोकल पॉइंट. सो दिस रेड लाइन is the latest rectum. और जो इसका हाफ है, half of the latest rectum, उसको हम small l से denote करते हैं. Equation 12 gives us the equation of a trajectory of a body which is moving under the effect of inverse square field force. ये equation हम already derive कर चुके हैं. The general equation of a standard conic in plane polar coordinates is
1 by r equals 1 by l bracket 1 plus epsilon cos theta. तो दैट्स इक्वेशन 13. तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो पहले हम ब्रैकेटेड टर्म में देखें, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, देन इट इज प्लस al स्क्वायर बाय म्यू के टाइम्स कोसाइन थीटा. तो यहाँ पे कोसाइन थीटा का कोएफिशिएंट है एप्सिलॉन और यहाँ पे कोसाइन थीटा का कोएफिशिएंट है al स्क्वायर बाय म्यू के. तो कंपेयर करके हमें एक्सेंट्रिसिटी के लिए एक्सप्रेशन मिलती है al स्क्वायर बाय म्यू के. और इसी तरह हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं, देयर इज 1 बाय आर, यहाँ पर भी है 1 बाय आर, और राइट हैंड साइड पे ब्रैकेटेड टर्म के बाहर यहाँ पे है 1 बाय एल और यहाँ पे है म्यू के बाय एल स्क्वायर. तो इनको भी हम कंपेयर करेंगे, दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ दिस एल, स्मॉल एल, व्हिच इज हाफ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम. तो इन दोनों को कंपेयर करके हमें म्यू के बाय एल स्क्वायर इक्वल्स 1 बाय एल. तो यहां से हमें स्मॉल एल के लिए एक्सप्रेशन मिलेगी, वी विल टेक रेसिप्रोकल, सो दैट इज कैपिटल एल स्क्वायर. एल, कैपिटल एल स्टैंड्स फॉर एंगुलर मोमेंटम, तो कैपिटल एल स्क्वायर बाय म्यू के. What are fundamental constants? The parameters of a conic section, एक तो semi major axis और eccentricity, they are called fundamental constants. And what are dynamical constants? The total energy and the angular momentum of a body, they are called dynamical constants. डायनामिकल इसलिए बिकॉज एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम जो है वो एक बॉडी को पोजेस होते हैं बिकॉज ऑफ द मोशन. नाउ दिस इज द रिलेशन बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सेंट्रिसिटी एंड शेप ऑफ द ऑर्बिट. जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि अगर हमें एक कॉनिक सेक्शन की एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू पता है तो दैट यूनिकली डिटरमाइन्स इट्स शेप. So for the values of eccentricity greater than unity, the orbit will be hyperbolic. For the value of eccentricity exactly equal to 1, the shape of the orbit will be parabolic. For values of eccentricity ranging from 0 to 1, the shape of the orbit will be elliptical. इवन कि हम यहाँ पे इक्वल टू भी लिख सकते हैं. मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो सर्कल है दैट इज बेसिकली अ स्पेशल केस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट. सो फॉर वैल्यूज ऑफ एक्सेंट्रिसिटी रेंजिंग फ्रॉम 0 इवन इंक्लूडिंग 0 अप टू 1 excluding 1, the shape of the orbit will be elliptical. But when the eccentricity is exactly equal to 0, that is a special case of ellipse circle. यहां पर हम एक पॉइंट डिफाइन करना चाहेंगे, टर्निंग पॉइंट. टर्निंग पॉइंट एक पोजीशन है ऑन द ट्रेजेक्टरी ऑफ ए बॉडी, यानी ऑन द ऑर्बिट ऑफ ए बॉडी, जहां पे रेडियस ऑफ द रिवॉल्विंग ऑब्जेक्टिव फ्रॉम द सेंट्रल बॉडी, यानी जिस बॉडी के अराउंड हमारे जो दूसरी बॉडी है वो रिवॉल्व कर रही है, इट डज नॉट चेंज विद टाइम. और जब रेडियस चेंज नहीं होगा तो दैट मीन्स के r इज कांस्टेंट. उस पॉइंट पे r कांस्टेंट है तो दैट मीन्स कि अगर हम इसकी डिफरेंशिएशन देखें r डॉट, दैट शुड बी 0. एंड व्हेन r डॉट इज 0, दैट इज रेडियल वेलोसिटी, तो व्हिच इंप्लाइज एट टर्निंग पॉइंट the radial velocity is 0.
इसको हम डायग्राम से अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। सपोजिंग हमारे पास एक ऑर्बिट है इन द शेप ऑफ एलिप्स, और सन सिट्स एट वन ऑफ द टू फोसाई। तो मिसाल के तौर पे हम सन को इस फोकल पॉइंट पे रखते हैं, सो द सन इज हियर। और हम सन जो है इसको हम ज्वाइन कराएंगे with the planet. So supposing the planet is here, तो हमने planet को ज्वाइन किया with sun, तो this is the radial vector r। तो अगर हम इसकी डायरेक्शन देखना चाहें तो this is the direction of radial vector r। तो इस पॉइंट पर where the planet is at this time, अगर हम यहाँ पर इसकी वेलोसिटी देखना चाहें तो we have to draw tangent to its path, and supposing it is moving anti-clockwise like this, so that means के the velocity will be in this direction। तो ये जो वेलोसिटी है इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो एक कंपोनेंट तो आएगा अलोंग रेडियल डायरेक्शन और दूसरा आएगा परपेंडिकुलर टू द रेडियल डायरेक्शन। तो वो कंपोनेंट जो अलोंग द रेडियस है उसे हम कहते हैं रेडियल वेलोसिटी, और दूसरा जो कंपोनेंट है दैट इज परपेंडिकुलर टू रेडियल वेलोसिटी। तो इस पॉइंट P पे हम देखते हैं कि रेडियल वेलोसिटी का कुछ ना कुछ वैल्यू है। सो हियर द रेडियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो, दैट मीन्स एट पॉइंट P r dot is not zero। Let us consider the situation at point A। तो अगर हमारा प्लैनेट अब पॉइंट A पर है, the planet is here, तो radial vector will be directly from sun to point A, so that means the radial vector will be along this direction। तो point A पे फिर से हम velocity की direction देखेंगे, तो we have to draw a tangent। So we are drawing tangent, so this tangent will give me velocity of the body at point A, and you can see this velocity is perpendicular to the radial direction। तो यहां पर radial velocity will be zero, because यहां पर velocity का कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा along radial direction। so जब point A पे radial velocity zero है, तो which implies at point A r dot का वैल्यू जीरो है। That means at point A r does not change its value, hence this point A is our turning point। So टर्निंग पॉइंट हम डिफाइन करते हैं, ये एक पोजीशन होती है ऑर्बिट पे जहां पे रेडियल वेलोसिटी जीरो होती है, तो कॉन्सिक्वेंटली वहां पे रेडियल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू भी जीरो होता है। The total energy of a body under the effect of a central force is given by E is equal to 1/2 mu r dot square, this is the radial kinetic energy component, plus 1/2 L square by mu r squared, this is the centrifugal potential energy component, plus the real potential energy U। This is equation number 14। ये भी हम देख चुके हैं। The potential energy corresponding to an attractive inverse square field is U equals minus K times 1/r। Then E equals 1/2 mu r dot square plus 1/2
L स्क्वायर बाई म्यू और स्क्वायर्ड और u की जगह हम लिखेंगे माइनस के बाई आर. So this is the expression which we have got for the total energy. यहाँ पर हम एक टर्म डिफाइन करते हैं इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी, जो 1/2 म्यू आर डॉट स्क्वायर है, दैट इज द रेडियल काइनेटिक एनर्जी. तो बाकी जो इसके साथ ये टर्म है, इसको हम डिफाइन करते हैं एज effective potential energy. So UEFF, it stands for effective potential energy. So will be equal to 1/2 L square by mu r squared minus K by R. Then E equals 1/2 mu r dot square, और ये जो बाकी चीज है, बाकी दो टर्म्स हैं, इनको हमने इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया है. सो वी विल राइट प्लस U effective. Now at turning point, R dot is equal to 0. तो अगर हम दोनों साइड्स पे 1/2 म्यू मल्टीप्लाई करें, 1/2 म्यू और R डॉट का स्क्वायर करें, we will still get 0. So that means at turning point, the radial kinetic energy is 0. The radial kinetic energy is 0. This term is 0. Thus at turning point, the radial velocity as well as radial kinetic energy is 0. तो यहाँ से हमें टोटल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन मिलती है. सिंस दिस होल टर्म इज 0, तो यहाँ पे सिर्फ दूसरी टर्म बचती है, दैट इज इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी. तो हम टर्निंग पॉइंट को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट एक ऑर्बिट में ऐसी पोजीशन है जहां पे टोटल एनर्जी इक्वल्स द इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी. So let us see what is the relation between total energy of a body which is moving under the effect of a central force, और central force की भी हमने एक स्पेशल एग्जांपल ली है, attractive inverse square law force. So let us see what is the relation between energy and eccentricity of the orbit. At turning point, the total energy equals effective potential energy, which equals 1/2 L square by mu r squared minus K by R. And this whole thing equals E. तो मैं यहाँ पे वो E यहाँ पे लिखना चाहूँगा. In the next setup, we will take E on left hand side. इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो E का जो साइन है वो टॉगल होके माइनस बनेगा. तो वी विल गेट 1/2 L squared by mu r squared minus K by R, and then minus E is equal to 0. इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहूंगा, तो मैं इसी इक्वेशन को लिखूंगा like this, L square by 2 mu, इसको मैं लिखूंगा ब्रैकेट में, इनटू, तो फिर यहाँ पे 1/r स्क्वायर बचता है, तो आई विल राइट 1/r होल स्क्वायर. देन इट इज माइनस के, तो आई विल राइट प्लस, फिर मैं ब्रैकेट में लिखूंगा माइनस के, तो फिर बचता है 1/r, तो 1/r. देन देयर इज माइनस e, तो आई विल राइट प्लस, और मैं ब्रैकेट में लिखूंगा माइनस e इज इक्वल टू 0. तो अगर हम 1/r को x के बराबर रखें, तो L square by 2 mu, इसको सम कांस्टेंट a minus k, put that equal to b. 1/r we have already put that equal to x, और जो ये माइनस e है, it is another constant c. So we get an equation. A x square
plus bx plus c is equal to 0. So this is a quadratic equation which is quadratic in 1 by r, यानी x की जगह है 1 by r. तो quadratic equation का जो solution है that is given by x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac, and this whole thing has to be divided by twice a. So let us solve it. X की जगह है 1 by r is equal to minus b, that is minus k plus minus under root b square, that is minus k का square, then minus 4 into a है l square by twice mu into c, that is minus e, and the whole term has to be divided by twice a, that is 2 into a, which is l square by 2 mu. So this is what we get. तो यहाँ पे माइनस और माइनस that will become plus, और इसी तरह ब्रैकेटेड टर्म के अंदर this 2 will make this 4 as 2, और यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो we will get a plus sign here, और 2 and 2 will get cancelled. तो हम लिख सकते हैं in the next step that it 1 by r is equal to k plus minus under root minus k square will become simple k square plus twice el square, और divided में है division में है mu under root, and whole thing is divided by l square by mu. We will do one thing. We will write this as 1 by r is equal to k plus minus under root term में I will take k square common out, so this will become k square bracket, तो पहली term में तो बचेगा 1 plus twice el square divided by mu, चूंकि k square common out किया है और दूसरी term में k square है नहीं, तो हम denominator में लिखेंगे, and this whole thing is under a square root, and division में है l square by mu. तो इसको हम थोड़ा और सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं k plus minus this root is for k square and also for this bracketed term, तो हम अलग अलग root लिखेंगे, so this is k square under root into under root 1 plus twice el square by mu k square, and whole thing is divided by l square by mu. तो यहाँ पे देखें square root and square will go, so we will get k plus minus k under root 1 plus twice el square by mu k square, this is under root, and whole thing is divided by l square by mu. Next step में हम numerator में k common out करेंगे, so we will get k then bracket 1 plus minus under root 1 plus twice el square by mu k square, this is under root, and whole thing divided by l square by mu.
In the next step, we will take this L square by mu into numerator. तो वहां हमें इसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा. तो we will get 1 by r equals, तो इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, that is mu by L square, and there is also k, then bracket 1 plus minus under root 1 plus twice E L square by mu k square, and that is the solution. So this is the solution. अगर हमें R के एक्सट्रीम वैल्यूज लिखने हो, यानी कि अगर मुझे R का मैक्सिमम वैल्यू देखना हो, R इज इन डिनोमिनेटर, तो अगर मैं R का मैक्सिमम वैल्यू लूं तो दैट मीन्स द रियल वैल्यू इज, फंक्शन का जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो मिनिमम लेना है. तो राइट हैंड साइड पे भी हमें मिनिमम वैल्यू लेना है. और मिनिमम वैल्यू कैसे मिलेगा? जब हम ये माइनस साइन यहाँ पे चूज करेंगे. So that means I can write 1 by R max equals mu k by L square bracket 1 minus under root 1 plus twice E L square by mu k square. और इसी तरह अगर मुझे R का मिनिमम वैल्यू देखना हो, इफ आई हैव टू लुक फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ R, तो चूंकि R डिनोमिनेटर में है, तो दैट मीन्स कि फंक्शन का ओवरऑल वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए. तो दैट मीन्स मुझे राइट हैंड साइड पे भी मैक्सिमम वैल्यू देखना है, एंड मैक्सिमम वैल्यू तब मिलेगा जब हम ये प्लस साइन चूज करेंगे. So I can write 1 by R minimum equals mu k by L square, then bracket 1 plus under root 1 plus twice E L square by mu k square. I will call this equation number 15. The general equation of standard conic in terms of plane polar coordinates is this equation. तो अगर मैं इसमें R का मुझे मिनिमम वैल्यू लेना है, तो दैट मीन्स के ओवरऑल वैल्यू मैक्सिमम है, तो राइट हैंड साइड का मुझे मैक्सिमम वैल्यू लेना है. तो दैट मीन्स के cos थीटा should have its maximum value, और cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू इज +1. तो यहां पर मैं cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू यूज करूंगा +1. तो आई विल गेट 1 by R इज इक्वल टू 1 by L, देन ब्रैकेट 1 plus epsilon, and that is our equation number 16. Let us compare equation number 15 and 16. तो 1 by R यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है, तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है, इज इक्वल टू यहाँ पे म्यू के बाई एल स्क्वायर है, यहाँ पे 1 by L है. तो सेमी-लेटस रेक्टम के लिए हम ऑलरेडी वैल्यू डिराइव कर चुके हैं, दैट L इक्वल्स कैपिटल L स्क्वायर बाई म्यू के. उसके बाद ब्रैकेट 1, तो 1 यहाँ पर भी है, तो फिर जो कुछ यहाँ पे ऐड है दैट इज एक्सेंट्रिसिटी. सो दैट मीन्स दिस अंडर रूट टर्म शुड बी एक्सेंट्रिसिटी. सो एक्सेंट्रिसिटी इक्वल्स अंडर रूट 1 plus 2 E L square by mu k square, and this equation gives relation between eccentricity and the energy. Let us call this equation number 17. So equation 17 gives us eccentricity in terms of energy and also L, the angular momentum.
So that means chunki eccentricity determines the shape of orbit, and this eccentricity depends on energy and angular momentum. So that means indirectly the shape of the orbit, the trajectory, it depends upon the total energy and angular momentum. Now let us go one by one. For hyperbola, for a hyperbolic orbit, the value of eccentricity is greater than 1. तो इसको हम इक्वेशन 17 में यूज करेंगे. That means under root 1 plus twice E L square by mu k square under root should be greater than 1. Let us square on both sides. तो left hand side पे root हट जाएगा. We will do square. So square and root will go. We will get 1 plus twice E L square by mu k square is greater than 1. This 1 and 1 will go. तो हमें left hand side पे 0 मिलेगा. तो we will get twice E L square by mu k square is greater than 0. Now 2 is already greater than 0. L square is also greater than 0. Mu, it is always greater than 0, and k चाहे plus हो चाहे minus हो, this is always greater than 0 because इसका square है. तो यहाँ से हमें क्या पता चला? That E should be greater than 0. Thus, the total energy of a body which is moving in a hyperbolic orbit, its total energy should be positive. Next, let us take the example of parabola. For a parabolic orbit, the eccentricity exactly equals 1. So using in equation 17, we will get the under root term 1 plus twice E L square by mu k square is equal to 1. Let us take square on both sides. So left hand side पे square and root will go. So we are getting 1 plus twice E L square by mu k square is equal to 1. 1 and 1 will go. तो right hand side पे हमें 0 मिल रहा है. तो which implies twice E L square by mu k square is equal to 0. Now this 2 is not equal to 0. Object is revolving around a central body, so angular momentum is not 0. Reduced mass is not 0. There is some force acting, so k is not 0. तो यहाँ से हमें फिर energy 0 मिलती है. Then energy should be 0. So the total energy of a body which is moving in a parabolic orbit, it is total energy. Next, let us take the example of ellipse. For an elliptical orbit, eccentricity is less than 1, but greater than 0. The positive value to have. So using in equation 17, we get the under root term 1 plus twice E L square by mu k square, this whole thing less than 1. So let us take square on both sides. So square and root will go. So we will get 1 plus twice E L square by mu k square is less than 1. 1 and 1 cancels on both sides. So right hand side पे हमें 0 मिलता है. So next we get twice E L square by mu k square is less than 0. Now 2 is not less than 0. L is angular momentum, इसका square है तो cannot be less than 0. Mu to mass है, reducer mass always positive, cannot be less than 0.
के पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, इसका स्क्वायर है, कैन नॉट बी लेस देन 0। तो यहां से हमें एनर्जी ही लेस देन 0 मिलती है। सो एनर्जी शुड बी नेगेटिव। So the total energy of a body which is moving in an elliptical orbit should be negative. और चूंकि ellipse bound है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट elliptical orbit में रिवॉल्व करता है, we will call this as the bound motion. As a special case, we will take circle. मैं पहले भी बोल चुका हूं कि circle is basically ellipse. It's a special case of ellipse. For circular orbit, the eccentricity is exactly equal to 0. Let us use this in equation number 17. The under root term 1 plus twice E L square by mu K square under root. This whole thing is equal to 0. Let us square on both sides. We will get, तो यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर एंड रूट विल गो, वी विल गेट 1 प्लस ट्वाइस ई एल स्क्वायर बाय म्यू के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस 1 को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, इट विल बिकम -1। तो ट्वाइस ई एल स्क्वायर बाय म्यू के स्क्वायर इज इक्वल टू -1। लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ हम एनर्जी रखेंगे, E इज इक्वल टू वी विल गेट माइनस म्यू के स्क्वायर बाय ट्वाइस एल स्क्वायर। नाउ म्यू के स्क्वायर बाय 2l स्क्वायर, दिस इज पॉजिटिव, उसके आगे माइनस है, दो एनर्जी इज नेगेटिव, और एनर्जी का एक पर्टिकुलर वैल्यू है अगर हम ऑर्बिट सर्कुलर चाहते। So the total energy of a body which is moving in a circular orbit must be negative, and its value should be exactly equal to minus mu k square by twice l square, and circle is also a bound motion.